Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 11 mensuration from class 8th maths. In our previous video, we discussed how to find the surface area of a cube, cuboid or cylinder. We derived some formulae also related to these surface areas, and today we will be doing some examples based on these surface areas. Before we start, let us recall that the surface area of an object is the sum of the areas of its faces. जब हम एक ऑब्जेक्ट के सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस से मतलब है हमारा उन डिफरेंट फेसेस से जो ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं. द ऑब्जेक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट फेसेस एंड वी कैन टच दीज फेसेस, फील दीज फेसेस. एक्चुअली वी कैन टच द सरफेस, feel the surface. And now when we talk about the surface area of an object, we actually mean we have to find the area of the different faces of the object, and when we find its sum we get the surface area of the solid or the object. तो ऐसे जब हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके डिफरेंट फेसेस के एरियाज को हम सम अप करते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया मिलता है. एंड दिस सरफेस एरिया is measured in square units. This we discussed, and then we also discussed that the surface area can be divided into lateral surface area or total surface area. This lateral surface area is also called the curved surface area, and by lateral surface area we mean the area of only the four side faces or the area of only the four side walls. In case of lateral surface area, we do not take into account the area of the top face and the area of the bottom face. Lateral surface area के केस में हम top face और bottom face को consider नहीं करते हैं, सिर्फ चारों side faces को ही लेते हैं, उनका area add up करते हैं और हमें उस shape का lateral surface area या कह लीजिए curved surface area मिलता है. And the total surface area is obtained by adding the area of all the faces, not only the four side faces but also the top face and the bottom face. टोटल सरफेस एरिया के लिए हम सभी चारों साइड फेसेस को भी लेते हैं और टॉप फेस और बॉटम फेस को भी लेते हैं. ऑल्सो द क्यूबॉइड, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, द कर्व्ड सरफेस एरिया और द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, it is given by 2 into h into L plus B, or we can take it as 2 into L plus B into h. This is the formula. This should be very much learned to you. How we derived this formula, we discussed it in our previous video. Not only this one, we discussed all these formulae. Go through that video once again if you have missed it out, and then you can easily learn these formulae once you understand how we are getting them. Then the total surface area of a cuboid, it is given by 2 into LB plus BH plus HL, and remember L denotes the length of the cuboid, B denotes the breadth of the cuboid, and H denotes the height of the cuboid. Then cube, the curved surface area or lateral surface area of a cube is given by 4L square. जब हम 4 side faces लेंगे it will be 4L square, and the total surface area, it is 6L square. 6 squares are there in case of total surface, and so the total surface area is 6L square. L denotes the side of the cube, and then we have the cylinder. The lateral surface area or curved surface area of a cylinder is given by 2 pi RH. Now when we talk about a cylinder, in this case we don't have the four side walls, but here we have this curved part here in the center, this one, this rounded part. This part is said as the curved surface area of a cylinder. जो side पे आप देख सकते हैं center में ये rounded part है cylinder के केस में, उसे हम कहते हैं curved surface area या कह लीजिए lateral surface area of a cylinder. Okay, and this is obtained by 2 pi RH, where R denotes the radius of the circular base of a cylinder and H denotes its height. Then we have the total surface area 2 pi R into H plus R of a cylinder, where we also include the areas of the top circular end and the bottom circular end. तो total surface area में हम ये curved part भी लेते हैं और ये top circle और bottom circle भी लेते हैं. Now this one is 2 pi RH, the curved surface area. Top circular part has the area pi R square, the bottom circle has area pi R square. Add these three to get the total surface area. You will get this formula 2 pi R into H plus R. So once you understand how we get these formulae, you can easily learn them also, and then they will be very much helpful in solving many questions. We now take some examples from your book, and here we have example number 4.
An aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are 80 centimeter by 30 centimeter by 40 centimeter. Here we have one aquarium. It is a glass box in which some fishes are kept in water. You know what is an aquarium, and here we have been given the dimensions. Now when we have been given in this way, this means that the length, first number denotes the length of the aquarium. Here it is 80 centimeter. The second number denotes the breadth, and the third one denotes the height. So here you can see this is the length, this is the breadth, and this is the height. Now the base, side faces and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of the paper needed. यहाँ ये important है, किस किस को cover कर रहे हैं पेपर से? बेस को, साइड फेसेस को और बैक फेस को पेपर से कवर करना है. Have a look. The base, then the side faces. ये हो गया यहाँ से एक साइड फेस and this one is the other side face. इनको पेपर से कवर करना है. और फिर बैक फेस आप इमेजिन कर सकते हैं. At the back we have to cover these 4 faces by colored paper, and here we have been asked the area of the paper which is required to cover these faces. अब जितने फेस बड़े होंगे उतना ही पेपर ज़्यादा चाहिए, फेस छोटे होंगे तो पेपर कम चाहिए. अब यहाँ पर एग्जैक्टली बात करें तो जितना एरिया होगा फेसेस का उतना ही हमें पेपर चाहिए. अगर एरिया कम होगा, फेसेस का एरिया कम होगा तो पेपर कम चाहिए, फेसेस का एरिया ज़्यादा होगा तो पेपर ज़्यादा चाहिए. तो पेपर का जो एरिया फाइंड आउट करना है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ दीज फेसेस जिनको हमें कवर करना है. So actually here we will be finding out the area of these different faces, and then we will add them to get the area of the paper required to cover these faces. ठीक है, इन faces को cover करने के लिए उतना ही paper चाहिए होगा जितना इनका area है. And so here we will be finding out the areas of these faces separately one by one, and then we will be adding them up to get the area of the paper. Okay, we start the solution here. First we write the length of the aquarium. It is given as 80 centimeter and we denote it by the letter small l. Then we know the breadth is denoted by small b and it is given as 30 centimeter. Height of the aquarium we denote it by small h. It is given as 40 centimeter. Now we will be finding the areas of these faces one by one. We will first find the area of the base. We write here area of the base. Just go through the figure. This is the base, and how to find its area? It will be length into its breadth. Length और breadth को multiply करने से base का area मिल जाएगा, and so this will be L into B. Now L is 80 centimeter and B is 30 centimeter. So this will be 3 8s are 24 and 00 centimeter square. So this is the area of the base. Now we need to find the area of side faces. We will find the area of one single side face and then we will multiply it by 2 because the two faces at the side have the same area. So area of a side face. By this we mean one single side face. आप देख सकते हैं this one is the side face and we have this one as the side face. ये दोनों का area exactly same होगा तो एक का area निकाल लेते हैं, फिर उसको बाद में add करते समय 2 से multiply कर देंगे. Now how to find this side face area? You can see this will be B into H. Breadth into height. This one is breadth, this one is height. So breadth into height and this will be B into H. Now B is here 30 centimeters. So 30 into H is 40. So this will be 3 4s are 12 and 00 centimeter square. Next we have to find the area of the back face. So we write here, let me make some space. Area of back face. Now you can recall that the area of the back face is same as the area of the front face. जो front face का area है वही तो back face का area होगा. और वैसे भी आप देख सकते हैं how to find the area of the back face. It will be length into height. You can see here this will be length, this one length into this height. As you can see from the front also length into height. तो दोनों front और back दोनों faces का area same होगा, पर यहाँ पर हमें front को तो cover up नहीं करना है. We have to cover only the back face, and so here we will write the area of the back face. It will be length into height. Now length is 80
and height is 40. So this will be 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमने इन फेसेस का एरिया निकाल लिया जिनको कवर अप करना है. तो अब इन सबको ऐड कर लेते हैं. कितना बनता है टोटल एरिया? फिर जितना टोटल एरिया बनेगा इन फेसेस का उतना ही पेपर चाहिए इनको कवर अप करने के लिए. सो वी राइट हियर एरिया ऑफ एक्वेरियम टू बी कवर्ड विद पेपर. जो एरिया है एक्वेरियम का जिसे पेपर से कवर करना है वो कैसे मिलेगा? इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द बैक फेस प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ साइड फेस. आप देख रहे हैं बेस चाहिए, बैक फेस और फिर साइड फेस दो लेने हैं. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. द सम ऑफ दीज areas will give us the area of that part of aquarium which has to be covered with colored paper. Now we can add these areas. Area of the base, it is 2400. So 2400. Then area of the back face, it is 3200. So 3200 plus 2 times the area of a side face, it is 1200. So 2 into 1200. Now this will be 2400 plus 3200 plus here we will have 2400. 2 into 12 is 24. Now add up 4, 5, 6 and 4. It will be 10, 1 carried, 3 and 3, 6 and 2, 8. And then 2 zeros at the back. So we have 8000 centimeter square. Now this is the total area to be covered with paper, and so this will be the area of the paper that is required. We write here area of paper required is equal to area of that part of aquarium which is to be covered. Let me make some space. Which is to be covered. This should be very much clear in your mind. And so this implies area of paper required, it is equal to 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज द आंसर. तो हमें इतना ही पेपर का एरिया चाहिए इन फेसेस को कवर अप करने के लिए. आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल 5. द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर बाय 8 मीटर बाय 4 मीटर. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्यूबॉइडल रूम. एक रूम है जो क्यूबॉइड शेप का है. वी जनरली सी रूम्स इन दिस शेप एंड दिस डिनोट्स द लेंथ ऑफ द रूम, this denotes the breadth of the room and this denotes the height of the room. Find the total cost of whitewashing all 4 walls of a room if the cost of whitewashing is ₹5 per meter square. यहाँ हमें फाइंड करना है कॉस्ट. और कॉस्ट के केस में हमने क्या बात की थी, पहले भी हम कुछ एग्जाम्पल्स कर चुके हैं. जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है, जिस भी रीजन को रिलेटेड हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है, पहले उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर हम कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मीटर स्क्वायर, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया. गेटिंग इट? What will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं. एक रूम की बात हो रही है और उसके लेंथ ब्रेथ हाइट हमको दिए हुए हैं. अब हमें उस रूम के 4 वॉल्स को और बस 4 वॉल्स को पहले हमें वाइट वॉश करना है. देखिए वाइट वॉश करना है 4 वॉल्स को और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हमें दिया हुआ है ₹5 पर मीटर स्क्वायर. अब मीटर स्क्वायर रिलेट्स टू द एरिया और वॉल्स को वाइट वॉश करना है तो ये एरिया का ही क्वेश्चन है. पहले हम उन 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है, व्हेन वी रिलेटेड टू द रीजन about which we have to find the cost, first we find the area of that region. और वो यहाँ पर 4 walls हैं तो पहले हम इन 4 walls का area find out करेंगे. This means we will be finding the lateral surface area of this cuboidal room. इसका lateral surface area find out करना पड़ेगा. फिर वो एरिया आएगा, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ₹5 से और उससे हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स वी विल गेट. नाउ इफ़ द सीलिंग इज़ ऑल्सो वाइट वॉश्ड, अगर सीलिंग मतलब जो छत है, रूफ है अंदर से, उसको भी वाइट वॉश करना है
तब ऐसे में जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा. तब कितना कॉस्ट हो जाएगा ये हमसे पूछा है कि what will be the cost then. I hope the question is clear. We now start the solution. First we write the length, breadth and height of the room. Then we will find the lateral surface area of the room, because here we have to whitewash the 4 walls of the room. We take the next page. Solution. Length of the room, it is 12 meters. We write here L equal to 12 meters. Then the breadth is given by B and the height is given by H. Breadth is given as 8 meters and height as 4 meters. So we write here 8 meters and 4 meters. Now the 4 walls have to be whitewashed. So area to be whitewashed, it is equal to area of 4 walls. And how we get this area? It is lateral surface area of the cuboidal room. We obtain it by the formula. Yes, recall the formula, 2 into L plus B into H. With this we place in the values. 2 into L, it is 12. So 12 plus 8 into 4. Solve it to get the answer. This will be equal to 2 into 12 plus 8, it's 20 into 4. So here we have 2 2s are 4, 4 4s are 16 and 1 0. So it will be 160 meter square. ये हो गया आपका 4 walls का area. Area to be whitewashed, it is equal to area of the 4 walls and it is equal to 160 meter square. अब हमें इनको वाइट वॉश करने का कॉस्ट निकालना है और रेट हमें दिया है ₹5 पर मीटर स्क्वायर. इसका मतलब पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट है ₹5. तो 160 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट क्या होगा? इट विल बी 5 इंटू 160. उससे हमारे पास वो कॉस्ट आ जाएगा वाइट वॉशिंग का. वी टेक इट हियर. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, इट इज़ ₹5. So total cost of whitewashing four walls, it will be equal to area of 4 walls, which is 160 meter square, into this rate, which is 5 in rupees. We will get this cost in rupees. So it will be rupees 16 5s is 80 and 0. So rupees 800 will be the cost of whitewashing the 4 walls. Now if the ceiling is also whitewashed, for this we will have to first find the area of the ceiling. अगर ceiling को भी whitewash करना है तो पहले हमें उसका area निकालना होगा. तो हम यहाँ लिखते हैं now if the ceiling is also whitewashed, then area of ceiling. चलिए देखिए अपने अपने कमरे की सीलिंग, उसका एरिया कैसे मिलेगा आपको? इट विल बी गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ से आपको सीलिंग का भी और फ्लोर का भी एरिया मिलता है. सो हियर वी विल गेट इट एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इज हियर 12 and breadth is 8, so it will be 12 into 8 multiply, it will be 96 meter square. So this is the area of the ceiling. Now the cost of whitewashing the ceiling, we find it. Cost of whitewashing the ceiling. Ceiling को भी अब हम whitewash कर रहे हैं. वाइट वॉश मतलब जो सफ़ेदी करवाते हैं घर में, दिस मीन्स वाइट वॉशिंग. एंड नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, इट विल बी द एरिया ऑफ द सीलिंग इनटू द रेट. एरिया कितना है? 96 और रेट कितना है वाइट वॉशिंग का? इट इज़ ₹5. सो इट विल बी 96 into 5 in rupees. Multiply these two numbers, you will get it as 5 6 is 30, 3 carried 48. So rupees 480 will be the cost of whitewashing the ceiling. But here we have to find the total cost.
So total cost of whitewashing the 4 walls and the ceiling. For this we will be adding these two numbers. Total cost of whitewashing the 4 walls and the ceiling, it will be equal to, देखिए पहला कॉस्ट आपका आया था ₹800 ऑफ द 4 वॉल्स और सीलिंग के लिए आपका कॉस्ट आया है ₹480. दोनों को एड अप कर लीजिए. इट विल बी 80 and then we have 8 and 4 12. So it will be, let me make some space, I will write it properly here. It will be ₹1280, ₹1280. This much will be the cost of whitewashing not only the 4 walls but also the ceiling. Let us go through the question once again. यही तो पूछा था. What will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? तो जब पहले हमारे पास हमने L, B और H लेंथ ब्रेथ हाइट ले लिया और हमें कहा गया था कि 4 वॉल्स को ही वाइट वॉश किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट किया. इट विल बी द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम एंड सो दिस विल बी 2 इंटू L प्लस B इंटू H. यहाँ से हमें मिल गया, इट इज़ 160 मीटर स्क्वायर. अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, इट इज़ ₹5. ये हमें पता है. रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹5 पर मीटर स्क्वायर. तो जब हमारा एरिया आया 4 वॉल्स का 160 मीटर स्क्वायर, उसको वाइट वॉश करने का आपका कॉस्ट हो गया 160 इंटू 5, इट विल बी ₹800. एंड देन वी वर वाइट वॉशिंग द सीलिंग ऑल्सो. फॉर दिस we found the area of the ceiling, it is 12 into 8, 96 meter square, and then cost of whitewashing the ceiling, it is ₹96 into 5, ₹480. और फिर total cost आ गया आपका दोनों 4 walls और ceiling दोनों को white wash करने का, it is ₹1280. I hope the question is clear. Next we take here example 6. In a building there are 24 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meters. Find the total cost of painting the curved surface area of all the pillars at the rate of ₹8 per meter square. यहाँ बात हो रही है cylindrical pillars की. You can see in the figure these red ones are the cylindrical pillars. और इन pillars का जो curved surface area है उनको क्या करना है? Paint करना है. We have been given the radius and the height of each pillar. Radius दिया गया है, it is 28 centimeter for each pillar and the height is 4 meter. और हमें सभी pillars का जो curved part है, curved surface area, उसको paint करना है. तो obvious है, जब हमें cost find out करना है at the rate of ₹8 per meter square, तो पहले हमें इन pillars का curved surface area find out करना होगा. ये हमसे क्वेश्चन में निकालने को नहीं कहा गया है, पर ये हमें खुद समझ होनी चाहिए कि पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. उसमें भी पहले हम एक ही पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द नंबर हाउ मच पिलर्स आर देयर. देखो 24 पिलर्स आर देयर, तो एक पिलर का आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको फिर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा इन सभी पिलर्स का. और फिर कितना कॉस्ट लगेगा? ₹8 पर मीटर स्क्वायर. तो जो भी एरिया आएगा उसको ₹8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दीज पिलर्स. द क्वेश्चन इज क्लियर. वी नाउ स्टार्ट हियर solution. We start. Radius of each pillar, it is given as 28 centimeter. This is the radius. We write it here by small r, 28 centimeter. And then we have been given the height of each pillar. It is 4 meters. We denote it by small h. It is 4 meters. पर यहाँ तो एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में, दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं. यूनिट्स अलग अलग नहीं हो सकती, हमें यूनिट एक ही लेनी होगी. एंड सी हियर वी हैव बीन गिवन द रेट ₹8 पर मीटर स्क्वायर, तो हमें यूनिट लेनी होगी मीटर. और 28 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स. सो 28 सेंटीमीटर it will be equal to 1/100 into 28, और we can write it as 28/100. और नीचे 2 0 हैं, इनको कैंसिल करके पीछे से 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 and 2. यहाँ आ जाएगा आपका डेसिमल, सो इट विल बी
0.28 मीटर्स। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। वी राइट हियर, let me erase this rough part, this was just to explain, and this now can be written as 28 upon 100 meters, or we can write it as 0.28 meters. Now we have found the radius also in meters. What next? We have to paint these cylindrical pillars and the curved part is to be painted. So we write here now curved surface area. Let me write it properly. Of one cylindrical pillar. This will be given by, yes, what is the formula to find the curved surface area of a cylinder? It is 2 pi RH. Learn these formulae, children. Otherwise, it will be difficult to solve these questions. 2 pi RH. Now, this will be 2 into 22 by 7 into R. It is 0.28 into H. It is 4. Now, we can cancel this 0.28 by 7. आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको ऐसे सोच रहे होंगे 0.4 आएगा, 7 4 इज 28, तो आप हो सकता है सोच रहे हो 0.4 आएगा, बट दिस इज़ रॉन्ग। सोचिए कि पॉइंट है ही नहीं, तो जब आप 28 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 4। अब आप पॉइंट को देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें भी पॉइंट 2 डिजिट से पहले लगेगा। एक डिजिट तो 4 हो गया, एक डिजिट और हम लगाएंगे 0, सो इट विल बी 0.04 or 0.04. So in this way we can cancel 7 ones are 7 and 7 into 0.04, this will be 0.28. बात समझ में आ रही है कैसे कैंसिल करना है? ये अगर आप 0.4 लिख देंगे तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा. So we write it once again neatly. Let me write it once again. I hope you have understood. Now this will be equal to 2 into 22 by 7 and the radius is 0.28 into h. It is 4. This can be written as 2 into 22 and after dividing 0.28 by 7 we get 0.04 into 4. Now multiply these numbers. You will get the curved surface area of one single pillar. This will be 44 into this will be 0.04 into 4. We multiply again 44 into this will be 0.16. Multiply 44 by 16. 6 4s are 24, 24, 25, 26. Then we have 44. 4, 6 and 4, 10. 1 carried, 4, 5, 6, 7. So it will be 704 and when we mark the decimal, here you see it will be 7.04. 7.04 because here we have 0.16. So 7.04 and the unit will be meter square. This is the area of one cylindrical pillar and we have to find the area of 24 such pillars because there are 24 pillars. So we now find the area of curved surface area of 24 such pillars. ये तो एक पिलर का curved surface area था. It will be now 24 into the curved surface area of one single pillar. It is 7.04. So 7.04 meter square. दोनों numbers multiply करते हैं. We have 704 into 24. 4 4s are 16. Then we have 28. Here we have 2 4s are 8. 0 1 4. 6 9 8 6 1 and now we have the decimal here, so it will be 168.96 meter square. Now here the question is not ended yet. We have to find the cost of painting these pillars. इन pillars को अब paint भी करना है and the cost of painting we have been given, it is rupees 8 per meter square. So we write here now cost of painting an area of 1 meter square.
इट इज़ इक्वल टू ₹8। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट है ₹8 और हमें पेंट कितना एरिया करना है, वी हैव टू पेंट दिस मच एरिया, सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस मच एरिया, it will be this area into ₹8. We write here, now cost of painting 168.96 meter square area, this will be equal to ₹168.96 into 8. Now multiply these numbers. 8 6 are 48, 4 carat, 8 9 are 72 plus 4 it will be 76, 7 carat, 8 8 are 64 plus 7 it will be 71, again 7 carat, 8 6 are 48 plus 7 it will be 55, 5 carat, 8 1s are 8 plus 5 it will be 13. Now mark the decimal, it will be ₹1351.68. So here we write the total cost of painting 24 pillars is ₹1351.68. This is the answer. Once again we go through the question. We have been given in a building there are 24 cylindrical pillars. 24 pillars थे building में, आप देख सकते हैं ये कुछ ही दिखाए गए हैं फिगर में, पर आप इमेजिन कर सकते हैं there were 24 pillars और each pillar का रेडियस हमें दिया गया 28 सेंटीमीटर्स और हाइट दी गई थी 4 मीटर्स. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया. सभी पिलर्स का जो कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसको पेंट करना था और कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना था एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर. तो पहले हमने एक पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट किया. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंड्रिकल पिलर इट केम आउट टू बी दिस मच. फिर हमने इसी को 24 से मल्टीप्लाई किया टू गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द 24 पिलर्स, दिस वन. और फिर हमें कॉस्ट पता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए ₹8, तो दिस मच एरिया इट विल कॉस्ट दिस मच into 8 and then we got it as ₹1351.68. 1351.68 rupees. This is the cost of painting the 24 pillars. I hope the question is clear. Next we have one more example. We take example 7. Find the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and the total surface area is 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्योंकि क्वेश्चन में सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है तो ऑब्वियस बात है कि हमें यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना होगा इस क्वेश्चन में. अब यहाँ पर जो अननोन वैल्यू है पहले हम उसे कुछ वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं. व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड, वी हैव बीन आस्क्ड द हाइट और रेडियस हमें दिया गया है. वी बिगिन द सॉल्यूशन हियर. रेडियस को r से डिनोट कर लेते हैं. रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर. एक्चुअली ये किसका रेडियस होता है, जो सर्कुलर बेस होता है उसी का रेडियस होता है. सो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर. देन लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इट बी h सेंटीमीटर्स. ठीक है, सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम सारी वैल्यूज. सो इट विल बी h सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ द सिलेंडर वी आर टेकिंग इट टू बी h. देन वी हैव बीन गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. It is given as 968 centimeter square. This is given, and we know that the total surface area of a cylinder, it is given by which formula? We know total surface area of cylinder, it is given by the formula, just come up with the answer, it is given by 2 pi r into h plus r. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये तो हमें दिया गया है और ये इसका फॉर्मूला होता है, तो दोनों इक्वल हुए. वी टेक हियर, दिस इम्प्लाइज दीज टू विल बी इक्वल. 2 pi r into h plus r, this will be equal to 968. Now place in these values 2,
22/7, R हमारे पास है देखिए कितना 7 सेंटीमीटर, सो 7 इंटू H, इट इज़ अननोन तो H ही रहेगा, प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 968। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई वेरिएबल H में। अब क्योंकि H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो LHS में H के साथ ये जो नंबर्स हैं एक एक करके उन्हें हम RHS में ले जाएंगे, H को सेपरेट करेंगे इन सभी नंबर से और H की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल दिस 7/7 एंड देन वी विल बी लेफ्ट अप विद 44 here into H plus 7 equal to 968. Send this 44 to the RHS. H plus 7 equal to 968 upon 44. Divide. We see that we should divide by 11. 11 से divide करते हैं. Here we will get it 11 4s are 44 and here we will get 11 8s are 88. 16 minus 8 it will be 8, so 88. Again it will go 8 times, 88/4. Now we can easily divide by 4. 4 2s are 8, 4 2s are 8, and so here we get H plus 7 equal to 22. From here, let me write here, H plus 7 is equal to 22. This implies H is equal to 22 minus 7. H is equal to 15 centimeters, and this is the height of the cylinder which we were asked. We write the final answer here. Hence, the height of the cylinder is 15 centimeter. I hope the question is clear. We go through it once again. हमें क्वेश्चन में रेडियस दिया गया था सिलेंडर का और हाइट पूछी थी और टोटल सरफेस एरिया दिया गया था। टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, इसका मतलब यही फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। तो पहले हमने यहाँ बता दिया रेडियस को R से डिनोट करना, देखिए भूल गए हम। जब हमने यहाँ R डिनोट ही नहीं किया तो फॉर्मूले में हम कैसे उसको बता पाएंगे? डिनोट इट बाय स्मॉल r. लेट मी राइट इट वंस अगेन हियर, स्मॉल r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आप जो भी सिम्बल्स फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ पर डिफाइन ज़रूर कीजिए कि R क्या है, H क्या है। बिना डिफाइन किए आप फॉर्मूला लिखते हैं, देन इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। फर्स्ट डिफाइन R is the radius of the cylinder and we are giving it as the value 7 centimeter here. Then we assume the height which we have to find. उसको assume कर लिया हमने as h centimeter. Then total surface area it is given as 968 centimeter square. It is given. We can mention here given in the question. We know the total surface area of cylinder is given by 2 pi r into h plus r. बस अब ये दोनों values equal हो गई। इक्वेट करने से हमें एक इक्वेशन मिल रही है, वैल्यूज़ रखने के बाद सिंपल सॉल्व करना है और उससे हमें h मिल गया 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर विच वी वर आस्क्ड. I hope these examples are clear, the formulae are very well learnt by you and now you can solve any of the questions based on these surface areas. So practice, try to do the questions from exercise 11.3 and we will be taking them up in our next video. Bye for now. Thank you for watching.